Good morning, candidates. Now that the SSBs have started with full swing, okay, I thought let me tell you some points which have just crept into my mind as to what is the reason or what are the causes, the mistakes which candidates do and they don't get recommended, rather they fail in SSB. Okay, so I just jotted out some points for you all, and I thought that I will share my views along with you so that maybe it might become useful to you when you go for your SSB. Okay, so कुछ एक points मैंने लिखे हैं related to psychology test, okay, psych test per se, and I will cover it with you so that आप जब भी SSB के लिए जाए, keep these points in your mind, and there if you are able to avoid them, okay, I think it will be beneficial for you. Okay, so first thing, as you all know that in psychology you are being tested for TAT, WAT, SRT and SD. Okay, there are 4 tests in psychology, okay, over a period of 2.5 hours. Now the mistakes which people do in TAT test, that is test 1, okay, is first and foremost is not relating to the stimulus. Okay, the stimulus is shown to you, and thereafter you are supposed to write a story around the situation which has been shown to you in the stimulus. Okay, now because of some preconceived ideas in the mind, okay, some bad coaching or some bad guidance which floats around in so many social media platforms and otherwise also, people try to fix in their preconceived ideas, okay, their preconceived stories which they must have prepared while they were practicing into the stimulus which has been shown to you. Okay, so that becomes irrelevant. Okay, and if you are not relating to the stimulus, the entire story which you are going to write will have no value. Okay, so my suggestion is that relate or observe that stimulus carefully, and thereafter whatever you are writing, okay, write a story which is related to the stimulus. Okay, don't go into some preconceived ideas. Okay, don't go into thinking that okay, ऐसा ही कुछ मैंने एक story prepare किया था तो मैं उसको इसमें fix कर देता हूँ. It will not work. Okay, so go with the open mind. Whatever you see in the picture, okay, think and thereafter write a story around the stimulus which has been shown to you. Okay, and this happens because people are badly coached. They take guidance from the sources which have got no reputation, and of course some preconceived ideas which is floating in their minds, trying to fix in that idea into the situation. Okay, it doesn't work that way. Okay, number 2 is incomplete stories. Okay, most of the time last का outcome रह जाएगा या introduction नहीं देंगे आप. Okay, you will start off from the present. See, a story always will have 3 parts. What has led to the situation? That means the past. What is presently going on? That means the present. And what is the outcome? That means the future. Okay. Any one part is missing in your story. Okay. Your story will be deemed to be incomplete. Okay. So write a story, as I've covered in my previous lectures also, that your story should have what? At least 3 to 4 lines of introduction, 8 to 10 lines of your main body, and 2 to 3 lines of conclusion. Okay, this will make about 12 to 15 lines of your story, and if you're writing a story of about 12 to 15 lines, it is sufficient and it can be done by an average boy or a girl in 4 minutes. Okay, so if you're writing the story in such a pattern, it will be a complete story. Otherwise, any one part missing, it will become an incomplete story, and an incomplete story doesn't have any value. Okay, thereafter the attempt or the way you are taking this test is half-hearted, or I will say casual approach. Okay, why casual approach? Because you are in a hurry to write. Okay, most of the time I have seen the students, they are in a hurry to write the story. Okay, so 30 seconds when the picture is on the screen, they just have a look at the picture and they start writing without thinking what plot they will take, what theme will they make, and how will they identify a problem and thereafter give a solution. Okay, people are in a hurry, damn hurry to write the story. Don't do that thing. Don't do this mistake. 30 सेकेंड तक जब तक कि पिक्चर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, प्लीज 30 सेकेंड तक आप उसको देखिए. अगर आपको लगता है कि आपने सारे उसमें से कैरेक्टर्स पिकअप भी कर लिए,
तब भी स्टोरी पिक्चर को देखते हुए एक कोई अच्छी कंस्ट्रक्टिव स्टोरी लाइन सोचिए। ओके, एंड जब 30 सेकेंड के बाद पिक्चर ऑफ द स्क्रीन हो जाए तब आप 4 मिनट में अपना लिखना शुरू करिए। आई कैन अश्योर यू आप 4 मिनट में अपनी स्टोरी पूरी लिख लेंगे अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो 30 सेकेंड जब तक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है तब तक उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करिए और पिक्चर को देखते हुए एक अच्छी स्टोरी लाइन सोचेंगे तो आपको लिखने में उतनी ही आसानी रहेगी और आपके स्टोरी में वो कैजुअलनेस सी निकल के नहीं आएगी। आपकी इमेजिनेशन जो है वो शैलो टाइप की इमेजिनेशन नहीं होगी। आपकी जो स्टोरी जो बनेगी वो सुपरफिशियल स्टोरी नहीं बनेगी। ओके, रिमेंबर द टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। ओके, जितने अच्छी तरीके से आप इमेजिन करेंगे, जितना डीपली आप इमेजिन करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी स्टोरी निकल के आएगी। ओके, अगर आप शैलो इमेजिनेशन दिखाएंगे, आप जल्दीबाजी में रहेंगे, आपको लगेगा कि बस किसी तरीके से मुझे स्टोरी लिखनी है, ना काम नहीं चलेगा। ओके, एंड दिस इज द रीजन जब आपको काफी नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स मिलेंगे और वो लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने लिखी तो सारी की सारी स्टोरी थी बट मैं रिकमेंड नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दिस ओनली कि यू डोंट इमेजिन डीपली। ओके, इफ यू डोंट इमेजिन डीपली you will not be able to find out a good cause or a good problem. Okay, unless and until there is a good problem, okay, your hero or your central figure will not be taking that many actions to resolve that problem. Okay, and the number of action speaks about your OLQ. Okay, जितना ज्यादा एक्शन आपका हीरो लेगा उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज निकल के आएंगी और एसएसबी में पूरा गेम प्लान जो है बस आपके OLQs को चेक करने का ही है। तो अगर आप अपनी OLQs दिखा पाएंगे बाय डीपली इमेजिनिंग द सिचुएशन, इट विल बिकम अ बेटर स्टोरी एंड अ गुड स्टोरी आल्सो। ओके, thereafter self centric approach. Okay, your hero or your central figure does not mean कि सारे के सारे काम आपका हीरो ही करेगा। Okay, he should be able to utilize the supporting characters also. Okay, what we want is a team man. We don't want a self-centric person. Okay, जो कि सारा काम खुद ही करना चाह रहा है। Okay, और अगर कोई स्टोरी में सारा काम अकेले ही करना चाहता है तो उसका अप्रोच जो है वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच माना जाता है। That means he is not a team person. He wants to do everything by himself. His factor 2 qualities comes out with a question mark. तो ये अप्रोच आपको नहीं दिखानी है। Your approach should be to utilize all the characters, the supporting characters who are there, okay, to get the solution. Okay, however, the central figure जो हीरो आपका है वो लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखाएगा, वो लीड लेके रखेगा, बट जब वो काम करेगा तो उसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लीडर है तो लीडर सारे के सारे काम खुद ही कर रहा है। ओके, देन इट बिकम्स अ रॉन्ग अप्रोच इन राइटिंग द स्टोरी। Okay, thereafter people think, okay, it's a myth that I'm going to SSB, so I should write maximum stories or maximum sentences related to army background only. Okay, it doesn't happen. Show your imagination, show your wide variety of imagination. Okay, after all, it's a test of imagination. So ऐसा नहीं कि आपकी विचारधारा, आपकी इमेजिनेशन खाली एक आर्मी की तरफ ही, आप सिर्फ वही उसी को 12 स्टोरी में सिर्फ सारी आर्मी के ऊपर ही आप लिखे जा रहे हैं। No, this shows a narrowed, skewed imagination. Okay, your imagination should be a wide imagination. Take all the aspects of your life, day-to-day routine, things which you see in your life, and write story in a variety of manner. Right? And finally, I will say, no reward seeking, no recognition seeking attitude should be displayed. Okay, ऐसा नहीं कि कोई भी काम किया तो उसको मेडल मिल गया, उसको ट्रॉफी मिल गई, उसको परमवीर चक्र मिल गया, उसको 10,000 रुपए का गिफ्ट प्राइज मिल गया। रिवॉर्ड सीकिंग और रिकॉग्निशन सीकिंग एटीट्यूड नहीं दिखाना है आपने। ओके, जस्ट लेट योर हीरो डू द जॉब एंड thereafter be satisfied with the efforts because the output has to be a positive output. Right? So this is as far as TAT is concerned, the story writing test is concerned, test 1. Okay. In WAT, if we come to WAT, the things which you should keep it in mind, okay, or rather which you should avoid, और जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, वो ये है कि पहले और फोरमोस्ट आपको पर्सनल रिस्पॉन्सेज ज्यादा नहीं देने।
ओके, आई मी माई सेल्फ वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना है व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरी. ओके, सो नो पर्सनल रिस्पॉन्सेज, नो ब्लैंक्स. ओके, 60 के वर्ड्स है तो 60 के 60 सेंटेंसेस आपको लिखने की प्रैक्टिस डाल लेनी चाहिए अभी, चाहे जितनी भी मेहनत उसके लिए क्यों ना करनी पड़े. Okay, you should practice and practice and practice till the time you are able to write all 60 words, all 60 sentences. Okay, next is why it happens, blank क्यों हो जाते हैं? Because people write long sentences comprising of 10-12 words. Okay, so if you are writing sentences of 10-12 words, gradually you are eating up the time of your next word, and sometimes it will come that you will lose out 2 or 3 words. Okay, so practice writing smaller sentences, okay, which are giving your original ideas. So no borrowed ideas, no idioms, phrases, okay, whichever the statements or the logos which are there in the market, avoid them. Give your originality. Okay, we want your own original product, and that comes out in the form of observational sentences. Okay, so maximum observational sentences you should practice right now while you are preparing yourself, and thereafter go and produce it with the same zeal, with the same josh in the SSB also. Okay, now when you come to SRT, situation reaction test, which is test 3, okay, no premotor responses. Okay, what is premotor response? I have covered it in my lecture also previously. No trying, it is I will do these things. Confirmed action होना चाहिए. No saying that I will try and do these things. ओके, ट्राई वाला अप्रोच नहीं, कंफर्म्ड एक्शन आपके होने चाहिए. ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी करेक्टली. ओके, बिफोर यू राइट द रिएक्शन टू एनी सिचुएशन, अंडरस्टैंड इट क्लियरली, वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए और फिर उसी के हिसाब से अपना रिएक्शन दीजिए. ओके, नेवर अज्यूम एनीथिंग अदर देन व्हाट इज गिवन इन द सिचुएशन. ओके, जैसा सिचुएशन में दिया हुआ है बस उसके हिसाब से आप अपना रिएक्शन देंगे. डोंट अज्यूम, देयर विल बी 1000 थिंग व्हिच इज एसोसिएटेड व्हिच यू कैन अज्यूम टू दैट सिचुएशन. ओके, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द रिएक्शन हैज बीन आस्क्ड, एंड देयरआफ्टर गिव योर रिएक्शन अकॉर्डिंगली. ओके, नो ट्राइंग, नो शैल डू दिस थिंग, विल डू दिस थिंग, ऐसे ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है. ओके, एंड फाइनली राइट मैच्योर्ड रिएक्शन, सेंसिबल रिएक्शन. ओके, कमिंग डाउन टू a good citizen, a good candidate who has got those 15 OLQs in him or her. That is the bottom line. Bottom line of SSB is displaying your OLQs. Okay, so write sensible, mature reactions which are giving out your OLQs. So these are the points which just came into my mind, and I was scribbling it down for all of you. I thought I will share it with you. Maybe it will be beneficial for all of you. Okay, so here I am, Avinkamani Mukesh Tiwari, signing off for today's lecture, and will come out with more so lectures to help you out in your SSB. Thank you, candidates.